So question is, bus X travels a distance of 360 kilometers in 5 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 kilometers in 7 hours. Which bus travels faster? First question is this. Next is, arrange the following speeds in increasing order. An athlete running with a speed of 10 meter per second, a bicycle moving with a speed of 200 meter per minute, a scooter moving with a speed of 30 kilometers per hour. So you have to arrange them in increasing order. Means सबसे कम जिसकी speed है वो first, फिर next वाला और फिर ज़्यादा. Okay. So do these two questions. First question is, bus X is faster. Okay. And if we have to arrange the speeds in increasing order, so first is first तो speed of bicycle है, then speed of scooter and then speed of athlete. Okay, so increasing order में होगा 200 meter per minute, फिर 30 kilometer per hour, फिर 10 meter per second. Okay, I am solving both the questions here. You can see. So question 1, bus X travels 360 kilometers, distance is 360 kilometers. X के लिए calculation कर रहे हैं. Okay, and time is 5 hours. So if we have to compare, कौन fast travel कर रहा है, we will find speed in both the case. So speed for X is equal to distance upon time, that is equal to 360 upon 5. It will be in kilometer per hour. 360 divided by 5 is 72 kilometer per hour. Okay. Speed for Y. Okay, for Y data is given. Distance is 476 kilometers. Time is 7 hours. So speed will be distance upon time again. 476 upon 7. So that is 7. 6 are 42, 56, 7 8 are 56. Okay. So whose speed is greater, Manav? Ma'am, X. X की है ना, तो speed of X is greater than speed of Y. Clear है? Yes. Yes. ठीक है. Next question. Can I move? Yes, Lakshya, is it clear? Yes, ma'am. Then next question. Arrange the following speeds in increasing order. Athlete की already 10 मीटर पर सेकेंड में दी है. ठीक है. कोई भी टू या मोर क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो उनकी यूनिट सेम होना चाहिए. इसकी मीटर पर सेकेंड है तो व्हाट विल डू, will convert others also in meter per second. Bicycle moving with 200 meters per minute. एक मिनट में 200 meters. ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 200 divide by 60. This will be in meter per second. Okay, so 6 3s are 18, 23.33 meter per second. Okay, then C, 30 kilometers per hour scooter. Okay, so kilometers per hour to meter per second, what I should multiply, Laksh? किलोमीटर पर आवर को मीटर, हाँ 1000 और डिवाइड क्या करेंगे? 60 इंटू 60 या फिर शॉर्टकट ये है मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 18. किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18. ओके, सो व्हेन वी विल डू दिस कैलकुलेशन इट इज बेसिकली 150 अपॉन 18. ओके, so it is 8.33 meter per second. Okay, so now we have to arrange them in increasing order. First is सबसे कम स्पीड इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी. So we can write first is or 200 meter per second, meter per minute, sorry, then is 30 kilometers per hour and then मैम is 10 meter per second. Yes, मैम मैंने ऐसा किया कि दोनों को मैम फर्स्ट और थर्ड को
Okay, so do this question. Question 3. Solution. It is given a snail covers a distance of 100 meter in 50 hours. We have to find average speed in kilometers per hour. So basically, when we have to find speed in kilometers per hour, distance should be in kilometers and time should be in hours. Okay, speed is equal to distance upon time, and distance should be in kilometers. 100 meter can be converted to kilometer. Distance is 100 meter. If I have to convert it to kilometer, ये क्या हो जाएगा? 100 upon 1000 kilometer, because 1 meter equals to 1000 kilometer. 1000. Sorry, 1 kilometer equals to 1000 meter. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. ठीक है, तो किसी भी मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. कितने भी मीटर्स है, अगर उनको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो विल डिवाइड बाय 1000. सो 100 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 शुड बी डिवाइडेड. सो वी आर गेटिंग 1/10. टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन आवर्स, तो ये हो जाएगा 1/10 एंड 50. So it is basically 1/500. So for doing this type of calculation, if you will multiply by 2 in numerator and denominator, it is basically 2/1000. That is equal to 0.002 kilometer per hour. This is the answer. 0.002 kilometer per hour. Clear है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 1 kilometer equals to 1000 meters. Next, question 4. A tortoise moves a distance of 100 meter in 15 minutes. So distance, again we have to find average speed in kilometers per hour. Distance is 100 meters. If I have to convert this distance to kilometers, divide by 1000. That is equal to 1/10 kilometer. Okay. Time should be in hours. Time is 15 minutes. If I have to convert minutes to hours, divide by 60. That is equal to 1/4. 1/4. Now, speed equals to distance upon time. Distance upon time. Distance is 1/10. Time is 1/4. That is equal to 4/10. जब भी कोई फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, A/B, C/D, तो D हमेशा A से मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. यहाँ पे 10 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 4/10. So it is equal to 0.4 kilometer per hour. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Aya, Manav, is it clear? So now some questions I am going to ask. First question to Laksh. Is displacement a scalar quantity? No, ma'am. No. Then it is what? Vector quantity. Okay. Manav, what do the following measure in a car? Speedometer? No, ma'am. No. What do following, मतलब जो मैं आगे बोलूंगी वो सब कार में क्या मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है कार में? Ma'am, the speed of the car. Speed. Okay. Yes, Yashvi, what does odometer measure in a car? Ma'am, distance Yes. travel. Yes, distance traveled. Okay, Laksh, name the quantity which gives us an idea of how slow or fast a body is moving. Name the quantity, physical quantity, which gives us an idea of how slow or fast a body is moving. नहीं पता. Okay, yes, मानव. कौन सी क्वांटिटी है जो ये उससे हमको आइडिया लगता है कि हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग? लाइक देयर इज नो पनिशमेंट. कुछ भी तुमको जो भी लग रहा है वो बोल सकते हो, गेस कर सकते हो. Scalar quantity. ऐसी कौन सी क्वांटिटी? क्वांटिटी मतलब
क्वांटिटी मतलब ऐसी कौन सी चीज है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये ऐसा क्या है जो हमको ये बताती है हाउ स्लो और फास्ट ए बॉडी इज मूविंग? किस चीज से पता? मैम स्पीड। स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड से पता चलता है किसी की भी कि वो फास्ट मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है। तो व्हाट नेम द फिजिकल क्वांटिटी? दैट इज स्पीड। ओके, नेक्स्ट यशवी, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल कब होंगे? एनीबडी? लक्ष्य, मानव? यस मैम मानव। when they are moving in a same direction. When they are right, when they are moving in straight line, or then okay, for all three of you, convert speed 6 meter per second into kilometer per hour. Tell me the answer. Convert speed 6 meter per second to kilometer per hour. 6 meter per second to kilometer per hour. Ma'am, 21.6. Okay, 21.6 kilometer per hour. Correct. Good. Others got this? Yes, ma'am. Okay. It is 21 point. Yes, Laksh, you got? Yes, ma'am. Okay. Then okay, an object, now listen the question carefully and find the answer and tell me. An object moves 100 meters in 9.83 seconds. An object moves 100 meters in 9.83 seconds. Calculate average speed in kilometer per hour. The speed in Kilometer per hour. Hundred meters in 9.83 seconds. Calculate average speed in kilometers per hour. Okay, so our question is, our object moves 100 meters, so distance is 100 meters. Okay, and in 9.83 seconds, time is 9.83 seconds. Okay, so distance we have to cover, we have to find average speed in kilometers per hour. 100 meters when converted to kilometers divided by 1000. 1000. Say 9.83 when seconds converted to hours divided by 60 into 60. Speed in kilometers per hour will be this. Actually we can write 1 upon 10. Distance upon time 9.83 upon 60 into 60. अब हमने ये देखा था जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो बाकी दोनों बीच में है 10 और 9.83, इसको सॉल्व करना है हमको. ओके, सो इट इज बेसिकली 100 and this. Okay, so basically it is 36000 upon 983. This division you have to do. Okay, 36000 and 983. So it is actually
Can anybody divide and tell me what is the answer? Yes, ma'am. Please wait. Getting? Yes, ma'am. Everybody? Or others are Ma'am, not? अपने हाँ. मैम अपने इधर 16 to Yes, ma'am. 16 to 100 to लगाया. नहीं, ये तो मैंने 983 का जो 9.83 था ना, उसका डेसिमल पॉइंट हटाया तो ये 100 लगा दिया. Okay, ma'am. 9.83 का ये डेसिमल पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लगाया. ओके? Okay, ma'am. Yes.